Okay, sir. So we have been given the go ahead. Right, Akshar. Okay, sir. Good evening, audience. Welcome to another enlightening session organized by Just Corpus. I'm your host, Akshar Aditya, and I'm absolutely thrilled to be here with you tonight. Before we begin, let me introduce you to our esteemed guest speaker, Mr. Abhinav Mishra, sir. Honored with the prestigious National Law Day Award 2022, sir has embarked on an illustrious journey in the prime years of his litigation career. As a first generation lawyer, he firmly believes in carving out a unique reputation. He serves as the Panel A Counsel to the Government of India for contesting matters before the Hon'ble Supreme Court. He also caters to matters pan India and is focused on providing strategic, innovative, and holistic legal solutions to his clients in varied fields of law, including but not limited to white collar crimes, arbitration, aviation, corporate, commercial, insolvency and bankruptcy, debt restructuring, dispute resolution, etc. To know more about his achievements and qualifications, you may head to our website. To our esteemed guest, thank you for joining us. We are honored to have you here with us tonight. Now, before we dive into our topic, let me give our viewers a brief overview of the organizer behind tonight's session. Just Corpus is a body of legal professionals who have brought various aspects and chains of law under a single umbrella. Just Corpus, an edtech platform established in 2020, has a wide reach of 600,000 clicks per month on an average basis on its website. The inspiration was derived from the ever growing need for law students. Just Corpus has also incorporated interdisciplinary journals as its subsidiaries, named the Just Corpus Law Journal and the International Journal of Law, Research, Education, and Social Sciences. Now, on to the main event. This evening, our esteemed guest will be shedding light on the topic of analysis of bail jurisprudence under PMLA, presumption of innocence versus statutory restrictions. Sir, the virtual stage is yours. Right. Thank you so much, Akshar, and thank you so much, Just Corpus, for giving me this opportunity today to speak amongst you people on a very interesting, complicated topic that we are facing these days, the interpretation of the prevention of money laundering. So today I'll be taking in detail the case of bail applications when the matters of money laundering are brought before the courts of law. So, the audience that is with me, can anyone make an attempt of defining what money laundering actually is? I'm really sorry, sir. The session is one way. They cannot interact with you They right can now. they can type the response in the YouTube, right? I can Yes, see sir. that. They can type the Yeah, yeah, response. yeah, yeah. They can, Okay, yeah, they can do that. sure, sir. So the audience which is live with me, can any one of you make an attempt of defining for me what money laundering is? You can type your responses in the YouTube section. Okay. So I believe that I'm yet to receive responses on YouTube. So prior to that, I'll only make an attempt to define what money laundering in a layman terms basically means is money is what we know as an object or a record that is generally accepted as a payment for goods and services. And yes, some Kostav has said that money laundering is known as illicit possession of money. Partially right, Kostav. I'll make an attempt to delve on this topic in a greater detail. So money, we all know that it is an instrument which is used for any sort of transaction and which is usually recognized by the economy of that particular community or that particular state. Laundering, जैसे कि आप समझते हैं कि laundering can be for anything. Laundering basically is the process of cleaning. So money laundering is, if I have to define what money laundering is, money laundering simply means that the act of cleaning money that has been obtained through an illegal source and projecting it as a legitimate source of income is known as money laundering. So in layman terms, अगर कोई भी आपसे पूछे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या करना होता है, तो मनी को खराब पैसे को किसी ऐसे तरीके से रूट किया जाना
कि उसका end result, the outcome of it appears to be legitimate is known as money laundering. That entire process is known as money laundering. It is a penal offense. So we have the Money Laundering Prevention of Money Laundering Act 2002 in place to cater to the menace of money laundering. Can I have the next slide, please? So there are processes of money laundering, though the topic is to revolve around the cases of bail applications. But I think that prior to moving to the aspect of delving into bail applications, we should first understand how money is laundered. Because once we understand this entire mechanism, then we would be able to appreciate the phenomena of why the offense of money laundering has been given the special nature and why there is a reverse burden of proof in these cases. So the process of money laundering also involves three steps or three methodologies. One is basically how the proceeds of crime is placed. You may see the PowerPoint in front of you. The second process remains the layering to conceal the source. And the third process is the integration of proceeds of crime into an accounted economy. So if I have to explain it to you, the first stage, that is known as the disposal, the physical disposal of proceeds of crime. So what the offender usually does here, he introduces the illegitimate money into the mainstream financial system by putting the funds into accounting or banking system. जैसे कि अगर if I have to put an example to you that how it is beginning, how the process of money laundering usually begins. Imagine I have committed a case of cheating and breach of trust, right? I have obtained a money through an illegal source. So the very first aspect of laundering that source is how I place that money into the economy. So this is the first process जहां पर जो पैसा मुझे इलीगली ऑब्टेन हुआ है वो पैसा मैं बैंकिंग सिस्टम में या किसी अकाउंटिंग सिस्टम में जाके लेजिटिमेट दिखा रहा हूं. Imagine I have stolen that money. However, in the account that I am opening with the bank to store that money, I am using the source of receipt of that money to be an investment. So the banker is always going to consider my money to be legitimate, whereas it is only me who knows the source of investment that I have disclosed is false, fictitious, frivolous, and this money is simply being laundered to be made to show as a legitimate source of money, whereas it is an illegitimate source of money. So now it is. अब ये प्रोसेस होता कैसे है? इमेजिन मैंने 100 रुपए चुराए. अब मैं वो 100 के 100 रुपए को एक अकाउंट में खोल दूंगा. So if the amount is to the tune of 100 rupees, then it is no issue. But imagine this 100 rupee tune going to 1000 crores. If I steal 1000 crores and I open an account and store those 1000 crores, that transaction will be questionable, right or wrong? People can respond on the chat. Right or wrong? If I steal 1000 crore and I open an account to show that 1000 crore as genuine in a bank account, would it be scrutinized or not? Yes, good evening, everyone. You may respond to my question now. Okay. So many people say that right. Yes, okay. Therefore, इस 1000 करोड़ को एक करोड़ के ट्रांजैक्शन में तोड़ देते हैं. राइट? इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारा ब्रेकअप आ गया एंड दैट एक करोड़ को मैं अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करता हूं. राइट? सो one of the processes in this step, in the step of placement of proceeds, also remains the breaking of the heavy chunk of money that I have obtained illegally into smaller chunks,
so that they are not scrutinized. I believe somebody had asked me a question that if such a big transaction would take place, then it would be subject to a scrutiny. I believe I have answered your question now as to how these transactions are broken in parts and then be made to be invested so that they are never at all detected in the due process. The other aspect, the second part of it is layering to conceal the source. Now, एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया, अभी हमने पहला स्टेप पढ़ा कि पहली बार पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, 1000 करोड़ इलीगली ऑब्टेन हुआ, उसको 1000 चंक में 1-1 करोड़ के तोड़ा गया और वो 1-1 करोड़ 1000 डिफरेंट बैंक अकाउंट में डाला गया टू शो इट एज अ जेन्युइन सोर्स ऑफ मनी। अब आप देखिए ये प्रोसेस बढ़ता कैसे है। अब उस अकाउंट में आ चुका है ये पैसा, उस अकाउंट से ये एक और अकाउंट में जा रहा है। दे आर बेसिकली क्रिएटिंग अ चेन ऑफ ट्रांजैक्शन। यही लॉन्डर कर रहे हैं, यही ये रूट कर रहे हैं पैसे को। आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, उस 1000 करोड़ का और ब्रेकअप हो गया, 100 करोड़ आप में चला गया, 50 करोड़ किसी और में चला गया, 25 करोड़ कहीं और चला गया, 30 करोड़ कहीं और चला गया। दे हैव क्रिएटेड सो मेनी मल्टीपल सोर्सेज नाउ that it will be very technical to identify how that entire chunk of laundered money has since then proceeded post being laundered. Because now, अब क्या करेंगे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये सारे लोग जाके बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं उन पैसों से। So once you start buying shares, you start paying money to SEBI, you start clearing of the tax liabilities, etc. They start making this illegally obtained money to be legal. Doesn't the bank, Acha, Nishi Shekhar has asked a question, I think I'll respond to that. Doesn't the bank question the source of money anyone deposits in such a huge amount? बेटा ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। They may have broken down into so many parts you don't even know. आप 1000 करोड़ को जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उसको 1000 डिफरेंट अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाले गए हैं, आप उसको 2000 अकाउंट में भी खुलवा सकते हो, 5000 अकाउंट में भी डाल सकते हो। सो लिटरली, सो बेसिकली you have to have that conspiracy mind and that far-fetched planning as to how you are to launder this money so that it doesn't get detected. Yes, you people are right कि इतना पैसा आ रहा है, ये कैसे पकड़ा जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लेमन एग्जाम्पल। ये 1 करोड़ का हो सकता है, ये हजार रुपए भी इन्होंने बहुत सारे अकाउंट में डाले हैं। सो 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज ट्रांजैक्शन, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन। They may have bought shares of listed companies. They may have utilized the money in buying land. They may have done things like bond यार, ये मनी बॉन्ड बैंक में जाके एफडी खुलवा दिया। So all these are methodologies how to create an illegally obtained money into a legally obtained money. Right? Now the third process is integration of the proceeds of crime into the accounted economy. Once they have layered it, they will now utilize different sources to get this money back to themselves. इन्होंने पैसा लिया, उसको ब्रेक किया, उसको इन्वेस्टमेंट दिखा के किसी और को दिया, बट पैसा तो इनका है, खाएंगे तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो ये ऑफेंडर्स हैं, राइट? They could invest in a non-profit organization on paper, of course. Obviously, Mahi Maheshwari has asked a question. They has given a suggestion. I think this is a good one. Electoral bond is also a good thing. Yes, you people are right. Nishi Shekhar. So apart from the income tax department and vigilance departments, no authority really questions the income. Obviously, you tell me, when there are specific authorities in the state who are made to question these transactions, you may question this transaction being a third party agency as well. The bank has its own ombudsman, the bank has its own vigilance team. Now how much is the system of checks and balance, ये उस पे भी depend करता है काफी, right? So we genuinely don't know as to who can question. Yes, there are many authorities that can question, but who is doing the real questioning part is the problem. Therefore the need was felt to establish an independent entity known as the Directorate of Enforcement altogether.
because despite a number of system of checks and balances, these things were not being curbed or not being able to be curtailed. So I believe आप लोगों को ये पैसा घुमाने का प्रोसेस समझ में आया. मैंने गलत पैसा लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसको मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्ट किया, फिर उन मल्टीपल सोर्सेज से ये पैसा अपने पास रूट करवाने के लिए मैंने एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रक्रिया करी, जिसमें मैंने बिल्डर के साथ, मान लीजिए मैंने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो हो सकता है मैं उसी बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट कर लूंगा कि लैंड डेवलपमेंट राइट्स है मेरे पास. अब क्या हुआ कि मैंने कैश इन्वेस्ट किया था, मुझे लैंड मिल गया उसके एवज में. तो यू सी हाउ दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन राउटेड. So it is also a case that what has been initially broken down as illegally obtained and has been invested legally, the net result may be an altogether different product. मैंने पैसा लगाया था, एवज में लैंड लिया. हाँ, ये काम मैं लीगली करता प्रॉपर्टी टैक्स भर के, इट वुड हैव बीन अ लीगल ट्रांजैक्शन. बट ये काम मैं कर रहा हूं एक तरीके से ये दिखाते हुए कि मेरे पास, मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं बिल्डर को, बट देयर इज एन अग्रीमेंट वेयर द बिल्डर हैज अग्रीड दैट आई शैल पोजेस सो एंड सो राइट्स. So these are the nature of those transactions which, जिसको देख के पकड़ में आ सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के को व्हाइट करने की, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करने वाला गेम जो आप लोग समझते हैं, ये उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ये अग्रीमेंट एंटर हुआ है. अच्छा, okay, so now I'll take questions before I move to the next slide. Anmol Seth has asked me a question that if anyone is injecting foreign money into India, then will it be done through a money laundering process? Not really. Not really, Anmol. अगर आप लीगल सोर्स से पैसा फॉरेन से इंडिया ला रहे हो, फॉरेक्स वगैरह के ट्रेडिंग वगैरह करके, या वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, या बैंक का इंटरनल मैकेनिज्म का प्लेटफॉर्म यूज करके, बाय पेइंग ऑल दी सेस चार्जेस एक्सेट्रा, that is a legal transaction, right? So that you cannot call as money laundering. That that you call as bringing money to your own economy in a wide format, which the government recognizes because it will tax you, which the authority recognizes because that money is accounted for. So that is not the process of money laundering. That is a legal process. इलीगल प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यस, बाहर से देश में पैसा लाया गया है टेररिज्म सपोर्ट करने के लिए, नारकोटिक्स ड्रग्स सपोर्ट करने के लिए, इन फ्यूजिटिव एजेंसीज को बढ़ावा देने के लिए. शिवाजी द बॉस में फुल एग्जांपल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन शोन. वेरी गुड, चिराग. यस. So if somebody wants to know how money is laundered, they may go back on Chirag's opinion and they can see Shivaji the boss once again. Right? So the next slide, please. You people are with me, right? You people are able to understand what money laundering is, right? Because आप मनी लॉन्ड्रिंग का एसेंस नहीं समझेंगे तो फिर इसमें बेल क्यों जरूरी है, आपको ये समझ में नहीं आएगा. कैन आई हैव सम रिस्पॉन्सेज प्लीज? जस्ट कॉर्पस इज दैट इट हैजंट. आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं सर, आप लोगों को तो पहले से पता है चीजें. द ऑडियंस विथ मी, आर वी एबल टू गेट इट? फेयर इनफ. अब आइए हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा. इज देयर अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन. अनंत जेमिनी, is there a trail connecting the laundered money to real estate, luxury goods or high valued assets? That is subject to an investigation, Anant. Obviously there has to be a trail, तभी वो पैसा जो है इलीगल बोला जा रहा है. अगर ट्रेल नहीं होता, वो लीगल तरीके से ट्रांसफर होता, तो वो इलीगल क्यों होता? So that is for the investigating agency, the ED, to determine कि पैसा illegally आया है कि लीगल आया है. Okay, nice. So now I move on to कि भैया होता कैसे है मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप जान चुके हैं. मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आप ये भी जान चुके हैं. अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कहां से हुआ था. मनी लॉन्ड्रिंग का जब सबसे पहली हिस्ट्री अगर मैं ट्रेस करना शुरू करता हूं जूरिस्प्रूडेंस से, so it is the 2000 BC when the Chinese traders who used to loot money, okay, and but who used to loot money, but they never used to account it before the authorities to evade the tax payments. तो लॉन्डर वहीं से हो रहा है पहली बार.
ये क्या करते थे, ये पैसा वैसा चोरी चुमारी करके लाते थे, लेकिन ये अथॉरिटी, ये जब अपने राज्यपाल में घुसते थे तो इनको अथॉरिटीज को दिखाना पड़ता था कि इनके पास कितने पैसे हैं, और जो इनके जो उस समय के राजा महाराजा सेनापति वगैरह लोग थे, ये लोग उसमें टैक्स और सेस चार्ज करते थे। तो ये चाइनीज ट्रेडर्स ने लूटने के बाद दिखाया अपने रिकॉर्ड में जाके उन अथॉरिटीज को कि दे हैव नॉट अर्नड एनीथिंग फ्रॉम द लूट। सो एज अ मैटर ऑफ थिंग दे इवेडेड द टैक्स, क्योंकि अगर टैक्स पे हो जाता तो वो लीगल हो जाता। So this was the first ever instance of money laundering in the ancient world. It began from China. ऐसे भी मतलब many things which are not warranted in India has begun from China only. We have had some good experiences couple of years back. So money laundering is yet another example. ये Chinese भी ना, हाँ Safdar, I understand. I'm with you. Chinese हैं ऐसे थोड़े यार. So see, even money laundering they have brought it. We haven't. हमारे देश में इतना दिमाग था ही नहीं किसी के पास। हम लोग सीधे सच्चे लोग थे, हम इंडियंस थे। हम लोग छोटे मोटे क्राइम वाइम ठीक है, आईपीसी रिलेटेड ऑफेंसेस कर लेते थे, हमने ऐसे ऑफेंसेस कभी नहीं किए जिसके लिए स्पेशल स्टैट्यूट लाना पड़ गया था। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनेशनली डोमिनेटेड, यस वी ऑल आर राइट देयर। अब यूएस प्रोहिबिशन एरा की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंट मॉडर्न डे एग्जांपल में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आया। 1920 से 1933, आई वी आर कंफर्टेबल इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? It needn't be completely English, needn't be completely Hindi. I asked these questions in the beginning of the lecture, but today I've had a very rough day. Please forgive me if I have not been a good lecturer or a mentor, whatever you may call me, or a session speaker, whatever. So I'm sorry for that, but we can have a mixture of both the languages, right? It is easy to comprehend. Guys, थोड़ा सा response दे देते आप लोग। अच्छा लैग है, ओके सॉरी, टेक्नोलॉजी। चलिए कोई बात नहीं। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज एज एंड व्हेन द लैग इज फिनिश्ड। सो द यूएस प्रोहिबिशन एरिया। सो द ओके राजीव जी, आपका एक सवाल है सर। सर, इफ अ पर्सन यूज टू इन्वेस्ट मनी और रोटेट मनी टू अ नंबर ऑफ कंपनीज बट होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स इन his personal capacity, is it a case of PMLA? I think yes, this is a case of PMLA, Rajiv साहब। फिर मही हिस्टोरिकली वी हैव हैड एग्जाम, ठीक है, इट्स आवर ओपिनियन, हाउ डज इट मैटर, खा लेता है, इट्स ओके, वी कैन मिक्सचर विक्सचर, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कम डाउन टू इज द यूएस प्रोहिबिशन एरा। बहुत बड़े बड़े 30 मार्का लोगों का नाम यहाँ पे आता है जो इन पे मूवीज वगैरह भी बनी है काफी। दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सीरियल लूटर्स एंड स्कैमस्टर्स ऑफ देयर ओन टाइम्स। इन्होंने बेसिकली एल कपोने का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इन्होंने अल्कोहल बिजनेस से पैसा लॉन्डर करके लॉन्ड्री बिजनेस में वाइट कर दिया। So this is another example of 1920 where money obtained through an illegal source, अल्कोहल की स्मगलिंग की, उससे पैसे बनाए, लेकिन वो पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो गए। सो लोग पूछते कि ये लीगल है इलीगल है कैसे आए तुम्हारे पास, तो भाई साहब ने लॉन्ड्री के बिजनेस में उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग दैट वी आर टॉकिंग, राइट? सो दिस इज द हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, और केसेस एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास एंशिएंट वर्ल्ड और इन द रिसेंट टाइम्स अपने यूनाइटेड स्टेट्स में हम देख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हुआ क्या, आई टेल यू द थिंग दैट इज दैट इट हैज ऑल स्टार्टेड इन 1986. I don't think that is a part of my PowerPoint here. But the viewers who are watching me live or who are to view this session later can take the year as 1986. The United States for the first time enacted a full-fledged legislation to curb money laundering. It was known as the Money Laundering Control Act of 1986. George, you find this lecture very useful. Trust me, it has taken me 11 months to bring it down to you so simple.
because 1 year back when I started working for the Union of India and ED matters were being entrusted to me due to the grace of God. And let me tell you, it was difficult for me to also understand this process. So मैं आपको whatever information that I am able to share it with you today has taken me 11 months to bring it down to 45 slides. So the moment Aditya asked me कि सर क्या टॉपिक पे लेक्चर देना चाहेंगे, I thought कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और इस पे लेक्चर देना चाहिए, considering the factor that many of us have a very narrow or a very distorted interpretation of the law. But let me tell you, this is draconian and this is useful at the same time. How? इसकी हम थोड़ी, आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? जो भी डाउट्स है, यू कीप शूटिंग देम, आई विल कीप रिस्पॉन्डिंग टू देम वन बाय वन. बट अब आप समझिए, 1986 में यूएस में पहला कानून आता है जो कहता है मनी लॉन्डर जो हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए, राइट? इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जरूरी चीज ये पाई गई कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है. Laundered money is usually used either to finance terrorism or money is really used to either to finance terrorism or anybody. लॉन्डर्ड मनी का क्या इस्तेमाल हो सकता है? या तो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बंदूक बारूद खरीदने के लिए, इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए, या anybody who can give me why or where laundered money has been utilized to the maximum possible extent in our country. तो एक तो टेररिज्म के लिए यूज हुआ है और दूसरा क्या यूज हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? जो ये बता सकता है, दैट पर्सन कैन हैव अ गुड इंटर्नशिप एट माय ऑफिस ऑन अ स्टाइपेंड. वॉर, वॉर टेररिज्म हो तो गया. कौन सा वॉर लड़ोगी तुम सोना? Violence and chaos. Noor Abdul says drug. Ishani Chatterjee says drug. It is the drugs and narcotics and psychotropic substances. Right? So next we come to the Vienna Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1989. ये कन्वेंशन के आर्टिकल 3 में मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू बी अ menace contributing to a series of activities concerning narcotics and psychotropic substances. तो आप देखिए, गलत तरीके से पहले पैसा आता है और फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. Now you tell me, why should this offense, ladies and gentlemen you are with me right now, I have given you a source of how a bad source of money is brought in the system and is further utilized to commit more bad. Now you tell me whether you want an offender of this category to be prosecuted as a normal offender in law. Can I have your responses on this, please? Can I have your responses, please, guys? Election funding, I don't. ठीक है. So now I'll move on. So FATF क्या है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है. इंटर डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलके इसको सेटअप किया है. Nikhil says finally not as a normal offender. So Nikhil, you recognize the essence of punishing such a culprit with the most stringent laws in place, right? Yes, Payal also says not. Jia says no. Okay. ये फंडिंग पर इलेक्शन क्या बता रहे हो यार तुम लोग? Okay, fair enough. Therefore, bail is a case of rarest of rare here.
Here, jail is a rule because the essence of the offense is of that nature. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं पहले हम बेल पे आएंगे धीरे धीरे. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल लोगों ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया जिससे पता चलता था कि पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ द ट्रेड कंसर्निंग इलीगल ड्रग्स. राइट. सो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, वेरियस एजेंसीज, वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस ऑब्जर्वेशंस unanimously pointing towards a simple factor that whatever is the money laundered in the country is being utilized either to promote terrorism or to promote narcotics and drugs. So 39 members का है ये FATF, 200 jurisdictions में एप्लीकेबल है. इंडिया इसका मेंबर सिग्नेटरी है और 2000 में बना है, और इसी सिग्नेटरी बनने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA 2002 आया है. Clear till here? Can I move on? I think we have read all this. Okay. मनी लॉन्ड्रिंग बिल 1999 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, 2002 में बिल पास हुआ, लेकिन एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2005 से. लिख लें आप लोग ये. दो द एक्ट वाज इनैक्टेड in 2002, but it could only come into force on 1st July 2005, considering the timeline which has been lapsed for the constitution of the special courts and the special investigating agency or the prosecuting agency being the enforcement directorate. So जब 3 साल का टाइम लगा हमें पूरे सिस्टम को सेटअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में. Right, therefore, despite the law being passed in 2002, could only come into force in 2005. Nikhil Mishra has asked me a question before I move on. Nikhil Mishra का सवाल दिखाइए please guys. निखिल पूछते हैं मुझसे, how does PMLA affect a person's right to be presumed innocent until proven guilty? निखिल, अभी मैं बेल पे आऊंगा बेटा, उससे पहले मैं थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक समझा दूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा why there is a reverse burden of proof here. Right? Sir, as a normal offender, otherwise it can, ठीक है, ये सब तो उनके लोगों के ओपिनियंस है, fair enough. But sir, highest money laundering scam is done in Maharashtra, but Punjab is highest drug utilizing state. It's okay, it can be. 39 वत्स काट्याल, it can be. तभी वो लॉन्डर हो रहा है, राइट? जहां पे आया था पैसा वहां पर नहीं है, कहीं और गया है. आपने अपने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि पैसा महाराष्ट्र में लॉन्डर हुआ है लेकिन पंजाब में यूटिलाइज हो रहा है. दैट इज व्हाट इवन आई एम ट्राइंग टू से, कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सोर्सेस से इतनी जगह घूम चुका होगा पैसा कि आप पकड़ नहीं पाओगे कि इसमें लेजिटिमेट क्या था और इलेजिटिमेट क्या था. हैट्स ऑफ टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दे आर डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस. पॉइंट इज कि हमारा सिस्टम थोड़ा डिफरेंटली चलता है. we have the system of saying that we have the system of presuming that you are innocent until proven guilty, and it is only in these special statutes that you have the reverse burden of proof there, where you have to genuinely showcase your innocence. So you are right to that extent कि पैसा बिल्कुल महाराष्ट्र में लॉन्डर हुआ लेकिन पंजाब में उसका ड्रग यूज होता है. यस, क्योंकि वो पैसा महाराष्ट्र से पंजाब भेजा जाता है लॉन्डर करके, तभी वो लॉन्डर हुआ पैसा महाराष्ट्र में पंजाब के ड्रग ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है. FATF decision is challenged where? Gravity. I think gravity इंटरनेशनल कन्वेंशंस का वायलेशन आपको पता होना चाहिए कहां चैलेंज होता है. ठीक है. What repercussions do you have if you do not follow them? Okay. What repercussions do you have if you do not follow the FATF principles? You know, 2008 में
मुंबई अटैक्स वगैरह हुए थे, राइट? वी रिमेंबर दैट, राइट? वी ऑल रिमेंबर द मुंबई अटैक्स, राइट? इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉलो ना करने की वजह से इंडिया took nearly 2 years to get those terrorist organizations and terrorist groups and countries classified into promoting terrorism, etc. Because when India went to get that classification, India itself realized, or the UN made the India realize, that it is yet not compliant with the FATF recommendations. So first India needs to be compliant with the law, only then India can ask for international sanctions against different countries or groups. तो ये इसीलिए इंटरनेशनल ट्रीटीज की ऑब्लिगेशन हमारे देश पे भी है। मल्टी एमलाट बोलते हैं, मल्टीपल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। Different countries have a multiple legal assistance treaty executed between themselves to facilitate the process of curbing international fugitive organizations, etc., etc. Many things. So अगर आप इंटरनेशनल प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के हिसाब से अपने डोमेस्टिक लॉज को नहीं कन्वर्ट करते या उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंट नहीं बनाते, then as a country tomorrow when you are in a state of need and then you would want an international support, that international community may very well refuse to accord that support to you, considering the factor that you have not been compliant with the unanimous standards which have been set by different big countries in a conglomerate sitting together, right? I will take a new session. I am very happy and I'll be more than honored if Just Corpus will allow me to take it on the similar platform, because Aditya and I have been sharing a good bond till now. हमने अभी थोड़ा सा एक वेंचर और किया था जून में, and Aditya was one of our lead supporters. And आयुष, सॉरी यार, थोड़ा सा आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, प्लीज डोंट माइंड। आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, so this happens when you have good hectic work schedule and also please, I'm sorry for the mistaken name, right? So I think we can move on to the next slide. आदित्य भाई, आयुष भाई, सॉरी, ये पता नहीं क्यों ये आदित्य वैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है आयुष, so I am calling you my best friend only, तो उसमें ज्यादा बुरा मत मतलब फील कीजिएगा। ओके, हिस्ट्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे हम लोग हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन कि अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट कब कब हुआ, क्यों क्यों हुआ, अब आइए जरा वो भी पता कर लेते हैं। 2002 में जब कानून आया और 1 जुलाई 2005 से जब इसकी एप्लीकेबिलिटी इस देश में शुरू हुई, तो पता चला कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही रिमोट है। सो पहले बार 2005 was the first time, guys, when India understood that if at this point in time it does not go on to include more ambit into the definition of a proceed of crime, then it will not be in compliance with the international standards. So 2005 में सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया वो था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए। वहां पर यह चीज पता चलती है हमें, इफ यू हैव ऑब्टेन्ड एनी प्रॉपर्टी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली which is otherwise legal, which is otherwise illegal, then that will be included under the category of proceeds of crime. और इसके बाद जब हम लोगों को पता चला कि पैसा लॉन्डर करने के प्रोसेस में बहुत सारे इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो वैसे इंटरमीडियरीज जो इस पैसे को रूट करने में फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको भी पीएमएलए के एम्बिट के अंदर लाया गया, सो दैट दे कैन आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड अलोंग विद द मेन ऑफेंडर्स जो क्राइम करते हैं। अब हो सकता है कि ये इंटरमीडियरीज इनको पता भी नहीं हो कि जो ये पैसा घुमा रहे हैं वो गलत है या सही है, दैट इज सब्जेक्ट टू अ ट्रायल, बट द लॉ हैज कास्टेड फॉर एन ऑब्लिगेशन इवन अपॉन देम। ये समझें।
Kaustav has asked me a question. Sir, we know Nirav Modi and Vijay Mallya have run away from our country to England, sir. How are they not brought back? I think इसका जवाब जो है अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है लंदन में. Why don't you go and observe the proceedings there? है कौस्तव? Extradition का काम चल रहा है, right? The process is ongoing. The properties have started to be attached. Law takes its own course, I believe. And a government like this, which is working to ensure that, I think we should give them some time. And जहां तक नीरव मोदी की बात है, ये विजय माल्या को बताया मैंने तुम्हें. और जहां तक नीरव मोदी की बात है, why don't you become a prosecutor tomorrow and prosecute him? ED is looking forward to good special counsels. And as of, I am giving you a news update also. See, my team is good. They have just given me a news update which says that India is now in talks with France to attach properties of Vijay Mallya. So Vijay Mallya ने फ्रांस में भी कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, इंडिया वहां भी अटैचमेंट कर रहा है. तो ये सब पीएमएलए के अंडर ही हो रहा है, बिकॉज पीएमएलए ही वो एक्ट है जो इंडिया को इनसाइड और आउटसाइड दोनों पावर देता है to attach the properties which have been derived illegally. Right? Just Corpus, can you please share the PPT? No. This PPT is utilized to train a lot of people. This is way too confidential and this is my copyright. तो आप ये यहाँ देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वो भी इलीगल है वैसे तो, पर चलो मैं उसका कॉम्पनसेशन नहीं मांगूंगा. आई एम नॉट ऑफिशियली शेयरिंग दिस. राइट? 2009 was the next set of amendment. 2009 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया. उसका पीरियड जो था, जो प्रोविजनल अटैचमेंट में पहले 90 दिन हुआ करता था, कि 90 दिन तक ईडी हैड द पावर टू अटैच अ प्रॉपर्टी इफ दैट प्रॉपर्टी वाज फाउंड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलीगल मोड और एन इलीगल मैकेनिज्म. 90 दिन तक ईडी कुड हैव प्रोविजनली अटैच्ड इट, और उसके बाद फिर फाइनल अटैचमेंट के लिए ट्राइब्यूनल जाके कंफर्मेशन लेनी होती थी. वो पीरियड 90 से 150 दिन कर दिया गया. प्रेडिकेट ऑफेंसेस बढ़ा दिए गए. अब आपको एक चीज मैं समझाता हूं आगे बढ़ने के पहले, कि मनी लॉन्ड्रिंग करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है कि द प्रोसीड्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, राइट, द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दैट यू हैव ऑब्टेन्ड शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड इलीगली. तो पहले कुछ इलीगल एक्ट करना होगा, उस इलीगल एक्ट से कुछ इलीगल इनकम कमानी होगी, और वही लॉन्डर हो सकता है. There is a limitation to your money laundering act that it does not talk about laundering of a legal money. इसका एसेंस आप लोग अगर समझ पाए तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. The limitation with your Indian money laundering, the Prevention of Money Laundering Act, is that it does not create a provision where you can launder a legally obtained money. It only creates a provision where you can launder an illegally obtained proceeds. I think that is still a loophole, but I think that is not a loophole per se, because the international community is yet to recognize that. Some countries have started recognizing this matter also, कि मेरे पास मेरा genuine पैसा था लेकिन मैंने उसको भी launder करके illegal बना दिया है, तो even that is to be prosecuted now. However, the law does not cast for any such obligation here, as far as the Prevention of Money Laundering Act is concerned. Right now, we have the special courts empowering enforcement directorate. So it was realized that money laundering का अगर ट्रायल करना है, वहां पे अगर लोगों को मौका देना है अपनी इनोसेंस साबित करने का, तो उसके लिए नॉर्मल ऑर्डिनरी मजिस्ट्रियल कोर्ट से नहीं होगा या सेशन कोर्ट से नहीं होगा. देयरफॉर अ स्पेशल कोर्ट बाय द नेम ऑफ ईडी PMLA special court has been constituted, or the provision to constitute such a court was made in the 2009 amendment, and ED's power to investigate and carry out search, seizure and arrest was also increased to a certain extent in 2009. Now we have the Amendment Act of 2012, the rightmost corner of the slide. You may have a look at it.
This is with effect from 15th February 2013. The key changes, threshold of offenses जो हैं वो हटा दिया गया। पहले पता चलता था कि 1 करोड़ के नीचे अगर ऑफेंस हो रहा है तो वो पीएमएलए के एम्बिट में नहीं आता था। वो that 1 CR has been done away with. Now it is only figuring in Schedule B of the schedules attached to the PMLA. Earlier it was unanimously applicable to all the 3 schedules. So certain offenses were shifted from Schedule B to Schedule A. Certain offenses which had the cap of minimum 1 crore threshold to commit an offense or to invoke the jurisdiction of ED have also been done away with. Reversal of burden of proof. Why is this important? इसलिए ये amendment important है कि इसके पहले 2013-15 फरवरी के पहले जितने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मैटर्स थे वहां पे the onus to prove the guilt was on the prosecution. But with but with effect from 15th February 2013, this onus to prove as to who is innocent has been reversed. Now this onus has shifted upon the accused. Now if an accused is being held liable to have committed an offense of money laundering, it is not the prosecution's job anymore to showcase whether the accused was genuinely involved in the crime or not. The law presumes, section 24 खोल लें आप लोग Prevention of Money Laundering Act का, the law will presume, the special court will presume that the accused being so prosecuted by the enforcement directorate is already an accused of the offenses to which he is being accused of having committed, and the burden will be then on him to prove it to the court that no, he is actually innocent and not a culprit of the offense of money laundering. Now I'll take a 1-minute break. I'll first see the comment section if I have more questions to answer here. कहाँ तक थे हम लोग लास्ट? नीरव मोदी वेदी हो चुका था. Many people have asked for a feedback form. Okay, of senior government. Okay, but what's Katyal? Sir, if a government employee gets black money and he buys property in the name of his wife, then that employee will be liable, obviously. ब्लैक मनी है, उससे तुम बीवी का खरीदो, बच्चे का खरीदो, माँ बाप का खरीदो, वो ब्लैक है भाई. But if I have answered your query. जब आप उसको ब्लैक मनी लिख ही चुके हो, irrespective of the fact that money has been utilized anywhere, it is black. पता चला कि वो सरकारी अफसर के साथ साथ जो है अब उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व हो गई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपके पास. तो पहले ईडी एक आदमी को प्रोसिक्यूट कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट को, अब साथ साथ महिला उनकी मैडम भी प्रोसिक्यूट हो गई. द लॉ इज दैट स्ट्रिंजेंट. हाउ डज पीएमएलए लॉ बैलेंस द right of an accused with the need to fight money laundering? DK Basu versus State of West Bengal is still applicable to ED cases. Now there are more precedents beyond DK Basu, which I will be dealing when I take the topic of right versus burden of proof. 47 slides हैं guys, आप लोग 5वें 6ठे स्लाइड पर थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ. शाहिदीप साहब पूछते हैं मुझसे, हाय एवरीवन, हाय जो, गुड इवनिंग सबको. शाहिदीप साहब पूछते हैं हाउ टू गेट बेल इन पीएमएलए ऑफेंसेस. I think if I tell you that, I'll not be able to bill my clients anymore because it's on YouTube, right? So I think I don't think I'll be answering that question. You are literally ensuring that I stop billing my clients henceforth. Saidi again asked, yesterday also feedback form not shared. अच्छा ठीक है, वो आप उधर बात कीजिएगा. सफदर साहब कहते हैं, सर इन द मैटर ऑफ पीएमएलए द केस इज रिजॉल्व्ड अंडर आईसीजे. हम इंडिया में मनी लॉन्डर करके आईसीजे क्यों जाएंगे सफदर? इंडियन कोर्ट्स आर मोर देन कॉम्पिटेंट टू प्रोसिक्यूट मी, राइट?
इट इज इंडियन कोर्ट्स ओनली। इंटरनेशनल फ्यूजिटिव का केस है तो भी मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में वो प्रोसिक्यूट हो सकता है। जहां पे लॉन्ड्रिंग किया और जहां पे इलीगल प्रोसीड्स ऑब्टेन किया वहां पे भी हो सकता है, और जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग किया वहां पर भी हो सकता है। बस है डिफरेंस कि एक जगह प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए होगा और एक जगह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होगा। बट ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस, नो नीड टू गो टू आईसीजे। इट इज नॉट एन इंटर कंट्री डिस्प्यूट or not a dispute arising out of an international treaty. ICJ will not be an appropriate forum here. Okay, next slide, please. Acha, there is one more point in the 2013 amendment. Reversal burden of proof हो गया आपका. Expanded definition of money laundering. Now, here concealment, acquisition, possession, and use of proceeds of crime has also been defined under section 3 to be a separate distinct offense of the money laundering. पहले ये सब नहीं थे। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में ये सब चीजें नहीं थी। 2002 में आप 2005 में देखें आप कि 2005 का अमेंडमेंट कहता है एनीथिंग ऑब्टेन्ड लीगली और इलीगली विल बी इंक्लूडेड अंडर अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। बट 2013 में देखें आप, उसको और डेफिनेटिव बना दिया गया है। कंसील करना गलत पैसा, एक्वायर करना गलत पैसा, उसको अपने पास रखना, पोजेस करना और उसको यूज करना, ये 4 कैटेगरी बना दी गई थी कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी फॉल कर रही है 2013 में। इनहैंस पनिशमेंट पहले 3 साल की सजा थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो बढ़ा के 7 साल की कर दी गई है और मिनिमम पनिशमेंट अब 3 साल की हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Amendments in PMLA. Now the PMLA Act has also been amended in light of the Finance Act 2015. Amendment by Finance, the Finance Act 2015, इसमें जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट पे क्लैरिटी आ गई, प्रेडिकेट ऑफेंसेस को और ऐड कर दिया, और फॉरेन एसेट्स को भी अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आप एनआरआई वगैरह हैं या बाहर के ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट इंडियन भी है और इंडिया आके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आपको कुछ बैंकिंग फैसिलिटी उपयोग करनी है। 2018-19 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया उसमें हो गया वाइडर पावर्स दे दिया गया सर्च सीजर के लिए ईडी को। अब ईडी जो है आपके पास सर्च सीजर के साथ साथ अरेस्ट भी कर सकता था। यही चीज विजय मदन लाल चौधरी में चैलेंज भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वेर विजय मदन लाल चौधरी was held to be constitutionally valid and being a precedent defining the entire jurisprudence of the Prevention of Money Laundering Act. फिर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन हो सकता था आपकी प्रॉपर्टी का विदाउट अ कन्विक्शन। पहले मैंडेटरी क्या था कि अगर आपको किसी का प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करना है एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो आप ये काम तभी कर सकते थे जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अक्यूज्ड कन्विक्ट हो जाए। बट अब 2018-19 के अमेंडमेंट से इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द अक्यूज्ड पर्सन ऑट टू बी कन्विक्टेड फॉर हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड और कॉन्फिस्केटेड। बेल्स के और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस बना दिए गए। सेक्शन 45 of the money laundering, prevention of money laundering, when I say the money laundering act, please understand it is the PMLA that I am referring. The money laundering act specifies 2 sections. The bail provisions have been made more stricter now. It provides for 2 twin conditions to be satisfied for the grant of bail. One is whether the presumption upon the court as to whether the accused is guilty or not of the offense that he is being held liable for, and the guarantee that when the accused will be enlarged on bail, he shall not commit any similar offenses. ये सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशंस है, 2018 और 19 के अमेंडमेंट से आए हैं। इसके पहले देयर वर नो सच कंडीशंस। 45 दो existed in the act but without such detailed and such stringent provisions. उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग को अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बोल दिया गया, मतलब कोई वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है आदमी। सॉर्टेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। A definition of money laundering, Vienna Convention section 3 and all, they can read it. आप लोग बैराक खोल लीजिएगा। ये स्लाइड तो मैं क्या ही समझाऊं। I have already एक मतलब talked to you in detail about all this. Right, the next slide please. You people can read the BER Act, right? I do not need to read the sections verbatim, right?
Audience, please, can I have some responses? Okay, the audience can give me the response. Okay, you can read the section, so I need not explain the sections. Okay, okay, fair enough. The next slide, please. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसा फल, फल खाया आप लोगों ने? एप्पल, ऑरेंज, और क्या होता है यार? बनाना, एनी फ्रूट which has been obtained illegally or by the commission of a crime is known as proceeds of crime. तो किसी ऐसे चीज का फल अगर आप खा रहे हैं जो इलीगल कार्य से प्राप्त हुआ है, तो उसको लॉ कहता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम की वजह से आपने किसी बाहर देश में जाके फायदा उठा के प्रॉपर्टी बनाई है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। Proceeds of crime is any property or derived or obtained through those illegal acts. Proceeds of crime must relate to a scheduled offense and it necessarily has to be through a criminal activity. This is the pictorial representation, right? Section 2, small u for umbrella, defines what is a proceed of crime. I've given you this representation here. You may read the Bare Act for a more distinct अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पे पूरे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। scheduled offense, now this is very important। पीएमएलए में 3 शेड्यूल्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है जब बेसिकली एक scheduled offense होना जरूरी है। Now, I think if we can show them the slide for the scheduled offenses। हाँ, देखिए scheduled offense के 3 पार्ट हैं, A, B and C, right? scheduled offenses के 3 पार्ट हैं A, B, C। कौन कौन से offenses और कौन कौन से एक्ट scheduled offenses में आते हैं ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। आईपीसी आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 आता है, एनडीपीएस का सेक्शन 44 आता है, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरर्स एक्ट का 25 आता है, ट्रेडमार्क्स एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कॉपीराइट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, एंड apart from this, if you genuinely go and open the schedule, you will see a series of sections of various legislations, right? Those legislations will include the Indian Penal Code। Thereafter it will include ये जो आप अपने आंखों के आगे एक्ट्स के नाम देख रहे हो, ये सारे एक्ट इंक्लूडेड होंगे। इनके सेक्शंस बस ज्यादा हैं। जो मेन शेड्यूल है ये बस आपको एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये बना कर दिया गया है, ठीक है? सो पहले एक इलीगल एक्ट करो, उस इलीगल एक्ट से एक इलीगल प्रोसीड्स डिराइव करो, उस इलीगल प्रोसीड को मार्केट में ऐसे रूट करो कि वो लीगल लगे, और उस लीगल काम को दिखाते हुए फिर अपना जो प्रॉफिट इलीगली जो आप डिराइव करते थे वो अर्न करो, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसीलिए स्केड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी है। पहले आपको एक इलीगल सोर्स से पैसा आना बहुत जरूरी है, उसी को आप फिर फर्दर लॉन्डर कर पाएंगे। तो दीज आर दी 3 schedules under which
an act, if at all has been committed, shall entitle the Enforcement Directorate to exercise its jurisdiction and take up the investigation, considering that these are the sections and the acts through under which a predicate offense or a scheduled offense has taken place. हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में अगर प्रेडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो सकती. For money laundering to take place in your country, it is mandatory, required, and essential that there ought to be a crime under the predicate offenses or the scheduled offenses. Right? Thank you. Next slide, please. ये सब दिखाई चुके हैं हम लोग. Why are we repeating it again and again? Now, whether money laundering is a standalone offense? Yes, it is a standalone offense because इनिशियली जो आप कार्य करते हैं, इनिशियली जो आप इलीगल एक्ट करते हैं, उससे आपको एक प्रोसीड ऑफ क्राइम डिराइव होता है. बट जब आप उसको सब्सिक्वेंट लॉन्डर करते हैं तो वो एक सेपरेट डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि नो मैटर आपने किसी को चीटिंग करके उससे पैसे बनाए हो, you will be prosecuted there only for cheating. But if you have further diverted the money that you have obtained from that cheating, then you will be held liable for the offense of money laundering. Therefore, money laundering is a separate, distinct, and independent offense of the scheduled offense, that may be cheating, breach of trust, narcotics, copyright violation, whatever. Right? Scheduled offense as a prerequisite, I've already told you, इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट करने के लिए scheduled offense होना बहुत जरूरी है. जब तक scheduled offense नहीं होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा. Independence of money laundering offenses, the law also recognizes that once registered, the money laundering offense under PMLA stands on an independent footing than the scheduled offense, and that the offense does not then rely or need to rely upon a performance of a scheduled offense for its support or validation. इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्टिंक्ट, सेपरेट और इंडिपेंडेंट ऑफेंस बोलते हैं दैन दी प्रेडिकेट और दी शेड्यूल्ड ऑफेंस. हमेशा ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रिगर करने के लिए. अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर अगर मैं शेड्यूल्ड ऑफेंस में पिनलाइज नहीं हुआ तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे पिनलाइज हो सकता हूं? जब मैंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इलीगली ऑब्टेन नहीं किए हैं तो मैं फिर उसके फर्दर लॉन्ड्रिंग में कैसे प्रोसिक्यूट हो जाऊंगा? दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ has been carved out and it is pending before the Supreme Court. Please wait for an effective outcome for us to determine whether conviction in a predicate or a scheduled offense is mandatory for a conviction in a money laundering offense. Right? Next slide, please. विजय मदन लाल चौधरी, ये साइटेशन लिख लें, ये साइटेशन बहुत काम आने वाली है आपको. 2022 SCC Online Supreme Court 92. Basically, this is a matter which has delved upon the intricacies of the Prevention of Money Laundering Act and has categorically dealt with the powers of the ED versus the powers of a police officer, the registration of an FIR versus the registration of an Enforcement Commission Information Report, Enforcement Case Information Report. Now, it is also a judgment which has talked about the power of the ED to conduct search, seizure, and arrest. It is also a judgment which has categorically upheld the constitutional validity of the Prevention of Money Laundering Act 2002 and the powers of the Enforcement Directorate vested through various amendments. So please, if you want to read and you want to appreciate the jurisprudence of the Money Laundering Act, Vijay Madan Lal Chaudhary, it is a 540-pager judgment. Therefore, I could not have brought it down to a slideshow presentation. But I have just highlighted it for your able recall of knowledge whenever you find time or recall of memory.
you can go back and read this judgment, and please do not read this judgment as a novel. This judgment has separate various distinct parts, and all of those parts tell you a different story altogether. There are many ratio discendi in this judgment. हर पार्ट के लिए एक रेशियो है. जस्टिस संजय किशन कौल ने ये लिखा है जजमेंट, तो आप ये लोग पढ़ें जब भी आप लोगों को ये इसका समय मिलता है. Tarun Kumar versus the ED 2023, SCC Online Supreme Court 1486 is another landmark judgment which talks about the role of the Enforcement Directorate, and it says that, and the Commission of Money Laundering Offences, it simply says that the timing of the commission of the scheduled offense does not matter. What matters is the commission of a scheduled offense. It does not matter कि वो scheduled offense कैसे हुआ है, right? So कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी मैटर नहीं करता. Scheduled offense होना चाहिए, फिर enforcement directorate का jurisdiction arise होता है. Now I'll answer some questions. I think a lot of questions have been asked to me in the meanwhile. Let us go a bit above than what we are at. किसने सवाल पूछा था 138 वाला यार? वत्स ने पूछा है सेक्शन 138 ऑफ एनआई कम्स अंडर पीएमएलए. शेड्यूल में देखना पड़ेगा वत्स, रुको यार, ये तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो इतने बड़े शेड्यूल में तुमने इतना सिंपल रखा है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्यों खेल रहे हो मेरे साथ तुम? नो, the Negotiable Instruments Act does not come under the schedules of the Prevention of Money Laundering Act. Right. Next question I'll answer now. Sir, is it a central or a state subject or concurrent subject? Which authority or beta, what is a central or a state subject? Money laundering is a central or a state subject? None of them. If you are asking what, I want to know what do you want to know as a central or a state subject? Do state have jurisdiction on the subject? कौन से, मतलब अच्छा, you are talking about the individual states, whether they have a jurisdiction. Beta, ED is a central agency. Why do you think the states will have jurisdiction over it? Yes, they can make the amendments for the procedure to be followed by the ED, but I think even for that, no state is going to make any procedure because the agency is of such a special nature, and moreover it is centrally administered. So आप सही कह रहे हो कि सेंट्रल लॉ में भी तो स्टेट अमेंडमेंट होता है. आई एम गेटिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, बट vis-a-vis PMLA is concerned, I don't think any state has till now gone to the extent of making any inside amendment to the central act, and neither will it be doing so. Mean profit will be a proceeds of crime. मैडम पायल, आप पूछ रही हैं कि whether mean profit will be a proceeds of crime. आप मुझे ये बताइए, mean profit आपको illegally मिलेगा कैसे? मीन प्रॉफिट तो आपको केस जजमेंट के थ्रू मिलेगा, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मिलेगा, राइट? सो इफ इट इज नॉट इलीगल, हाउ विल इट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए? आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस नाउ, राइट? आई कैन मूव ऑन. हीरा पॉल पूछती है, सर, आई हैड अ क्वेश्चन whether ED frames an innocent to present as an accused, how the PMLA protects the right of an individual in such cases. Okay, first of all, let us assume and let us obviously understand one thing. ED जो है मैम, ED local पुलिस नहीं है. So ED will not frame anybody, right? Many, I believe, one of the viewers had posed a question to me about the Arvind Kejriwal issue also. Just because somebody has gotten a bail doesn't mean the case has ended, right? He may be a culprit. बेल होती है, कन्विक्शन होता है. Let us await the outcome of the court, one. And secondly, in my opinion,
I have worked on more than 100 matters for ED. And I'll be honest with you, I don't think ED frames anybody innocent. आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, हाँ, वो कम ज्यादा होगा, पेपर पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, वो ट्रायल के अधीन है. I don't think ED as an agency goes to the extent of framing innocent persons. If you want to take my opinion there, I think the question itself is wrong. Definition of proceeds of crime under the PMLA led to an overreach and potential misuse against legitimate business transactions. When have you seen ED prosecuting Tata? Let us talk about genuine transactions, commercial transaction, business transactions space. Have you seen the Enforcement Directorate prosecuting Vedanta? Have you seen the Enforcement Directorate prosecuting Audi, Mercedes? Have you seen the Enforcement Directorate prosecuting Tupperware? Have you seen the Enforcement Directorate prosecuting the Cafe Coffee Day, Starbucks, Indigo, any big pharmaceutical company? Central agency knows what is a genuine and ingenuine transaction, right? IAS, IPS, IRS officers वहाँ किसी reason से बैठ रहे हैं. Everyone, I think people clearing UPSC know what is legal and illegal. So just because somebody has been prosecuted doesn't mean that the ED only prosecutes genuine business transactions. ED, I think, is an agency to prosecute all the illegal transactions. And trust me, now the Supreme Court has started rejecting bail applications again. Earlier, the Supreme Court has started granting bail in the name of long period of incarceration. But now the jurisprudence is again twisting to that extent that yes, the twin conditions of Section 45 ought to be taken into consideration. You cannot be released on bail because you have just served a long period of incarceration behind the bars. So, can ED take a case by its own and conduct inquiry? No. ED is not as special an organization as the Central Bureau of Investigation. ED के लिए predicate offense होना जरूरी है local laws या local offenses में जो schedule defined है under the Prevention of Money Laundering Act. उसके बाद ही ED will become entitled to register an ECIR known as Enforcement Case Information Report, similar to an FIR. विजय मदन लाल चौधरी पढ़िएगा कभी टाइम मिले, 540 पन्ने की जजमेंट है, बहुत बेसिक्स आपका क्लियर कर देगी. और नहीं पढ़ पाए तो हमारे ऑफिस चले आइएगा, हम पढ़ा देंगे आप. राइट, कैन आई मूव ऑन प्लीज? नाउ वी हैव द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, powers relating to search, seizure and arrest by investigating officers. हम अरेस्ट की बात करते हैं क्योंकि अरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. कैन द ऑडियंस टेल मी why is somebody required to be arrested? Why would you want to arrest somebody? Hello, anybody? Please respond, guys. Why do you think that there is a need to arrest someone? For an offense, okay? To deter commission of further offense, okay? When he or she commits any offense, okay? Then why do you think is bail required? If somebody is an offender and ought to be arrested, then why do you think he ought to be released on bail thereafter? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको फिर जब वो ऑफेंडर है, वो अरेस्ट हो चुका है, तो उसको बेल क्यों चाहिए? फिर आप उसके लिए बेल की बातें क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट हिम डूइंग, अच्छा, सो दैट दे डू नॉट लीव द कंट्री, ओके. टू प्रिवेंट टैम्परिंग ऑफ एविडेंस एंड फ्रॉम एस्केपिंग, फॉर इंक्वायरिंग interim relief, betterment of the society, protect victim, preserve evidence. Very nice. Just to get no, then why do you think bail is required? Yes, अभी तो I have gotten responses as to why arrest is required. तो जब आदमी अरेस्ट हो ही चुका है
तो फिर उसको बेल क्यों चाहिए आपके नजरिए में? बेल इज फॉर फंडामेंटल राइट। अच्छा, ओके, दैट्स इट. Whose fundamental rights are we talking about? Persons who are otherwise culprits in law. Yes, until proven guilty, they are innocent. तब तक तो फंडामेंटल राइट है, और जेल जाने के बाद भी फंडामेंटल राइट है. सो दिस फंडामेंटल राइट मेक सेंस. दिस इज अ गुड रिस्पॉन्स. किसका था ये? अनंत का. अनंत ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. बेल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल. ओके, नाउ let us understand what is a reverse burden of proof here. रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल ऑफेंसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर ओनस होता है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और अक्यूज के ऊपर ओनस होता है टू क्रिएट अ रीजनेबल डाउट, राइट? यहां पे उल्टा है गेम. यहां सेक्शन 24 says that the courts ideally have to presume that the accused who is being prosecuted in that court is already into the offense of money laundering, and then the onus is on the accused to prove his innocence, that he was not involved in the offense of money laundering. Right? Next slide, please. Search and seizure में क्यों बता रहा हूं इन लोगों को? We can move on. We have to only discuss arrest here. Yes. Section 50 onwards. Now, Section 50 is another important provision here. Section 50 कहता है कि when does the enforcement directorate have the powers to issue summons, or to direct for production of documents, or to direct for tendering evidence to an individual. So it is Section 50 जो कहता है कि अगर आपको नोटिस आए तो जवाब दीजिए लिखित में, डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए तो वो प्रोड्यूस कीजिए, स्टेटमेंट मांगा जाए तो वो भी आप दे सकते हैं, बट हाँ, दिस हियर ईडी में यूज इट अगेंस्ट यू. बट अगेन इन द रीसेंट jurisprudence, the Supreme Court has again held that the statements that you give before the ED are ipso facto not admissible. They have to be further corroborated by sufficient independent witnesses and evidences on record. Binding compliance, हाँ, ईडी आपको बोल सकता है कि देश वेश मत छोड़ना मेरे परमिशन के बिना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है तुम्हारे ऊपर. So they have bound you under a compliance. And safeguards against coercions, it says that the statement that you give before the enforcement directorate must be free from all sorts of coercion, undue influence, and must not hamper the procedural investigation. So Section 50 is that section जिसका non-compliance पे you may be arrested. Therefore, Section 50 is of essence. Right? Right. Now we can move on to the next slide. अब आइए थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं. पहले पीएमएलए एक्ट को कंपेयर कर लेते हैं अर्स्टवाइल सीआरपीसी से. समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, खाली वर्ड का लैंग्वेज ऊपर नीचे हुआ है. रेस्ट एवरीथिंग, द एसेंस ऑफ इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. सेक्शन 19 कहता है पीएमएलए का that before the enforcement directorate is to arrest somebody, the authorized officer must have a reason to believe, based upon the material in his possession, to be recorded in writing as to why the person is guilty. Similar चीज 41(1) CRPC कहता है कि before arresting any person, the police officer must have a reasonable complaint to be made before him on the basis of a credible information. यहाँ पे पीएमएलए में बस दी ऑब्लिगेशन थोड़ी ज्यादा है कि द ऑफिसर हु इज टू अरेस्ट
has to have that material evidence in his possession basis which he can say that this is a fit case for an arrest, whereas the similar aspect is not there in the CRPC, right? राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करना सीआरपीसी में भी था, पीएमएलए में भी है, रीजन टू बिलीव वहां था, यहां पर है, वहां था रीजनेबल कंप्लेंट, इट इज वन एंड द सेम थिंग. What is the addition is the material in the possession of an officer found during the course of an investigation which mandates the arrest of an accused. ये पीएमएलए में एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो सीआरपीसी अर्स्टवाइल जो नाउ बीएनएसएस में नहीं थे, राइट? द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आइए अब बेल पढ़ते हैं हम लोग, द मेन एस्पेक्ट, द मेन टॉपिक जहां पे वी have to delve upon today. Questions hai? Prior to moving to the provisions of bail, let us answer some questions again. How does reverse burden of proof under PMLA, where the accused must prove their innocence, align with the constitutional presumption of innocence? केस रिफ्यूज हुआ है तो जो उनका उसमें हुई तीन लोग का. हाँ ठीक है. How does the reverse burden of proof under PMLA, where the accused must prove their innocence, align with the constitutional presumption of innocence? Okay, I'll answer this. देखो पीएमएलए ऑफेंसेस में आप लोग एक चीज समझ नहीं रहे. ऑर्डिनरी ऑफेंसेस में क्या है केस कि इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, whereas in a case of money laundering there is already a predicate offense FIR or an investigation or a trial ongoing against you. I'm answering to the question of why this reserve burden of proof. So कोर्ट का ये मानना है कि जब आप पे ऑलरेडी इलीगली पैसे ऑब्टेन करने का केस दर्ज हो चुका है और वो मिडवे है अपने कंक्लूजन की ओर जाने से, और उसी बीच में आपका अगर एक और केस रजिस्टर होता है कि आपने इलीगली डिराइव किए हुए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इलीगली फिर लॉन्डर किया, देन द केस विल बी दैट इट इज योर ऑब्लिगेशन टू शो कि आपने वो नहीं किया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 50% culprit the moment you have been caught red-handed of committing a scheduled offense. This is a subsequent FIR on you, ECIR on you, sorry. Therefore, this reverse burden of proof कि एक बार आपके ऊपर गलती पकड़ी गई है, it is the subsequent act for which you are being punished, then why the court must presume that you are innocent when there is already a criminal case, you have a criminal antecedent of committing a similar transaction, then why under a case of a subsequent transaction that presumption of innocence must be given in your favor? आप इनोसेंट हैं, आप प्रूफ कर लीजिए. कोर्ट क्यों मानेगी इनोसेंट? कोर्ट तो आपको ऑलरेडी शेड्यूल्ड ऑफेंस का अक्यूज मान चुकी है या उस पर ट्रायल चला रही है, राइट? नेक्स्ट, निखिल मिश्रा एक सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, कैन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस स्टिल अप्लाई if the person is accused under PMLA, or do the laws provision override this? Presumption of innocence negative है PMLA में, ये मैं यही कह रहा हूं that the presumption of innocence is too negative in this case, considering a simple factor that बेटा यहां पर आपको कानून ऑलरेडी scheduled offense करने का गुनहगार मान चुका है या उस गुनाह को प्रूव करने की प्रक्रिया चालू कर दी है. तो जब दूसरी बार आपको पता, देखो हम देखो एक चीज बताए तुमको, बहुत ही लेमन लैंग्वेज समझना,
बहुत ही लेमन, दिस इज नॉट एट ऑल लॉ, दिस इज ऑल कॉमन सेंस। आप दुकान गए, वहां से आपने एक एप्पल खरीदा, एक बनाना खरीदा, एक ऑरेंज खरीदा, एक स्ट्रॉबेरी खरीदी, और आप घर चले आए। आपने उसका बना लिया कस्टर्ड, डेजर्ट खाने के लिए, ठीक है। अगर आपने वो एप्पल, बनाना, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी लाने की प्रक्रिया इलीगली की थी, तो उसमें कस्टर्ड बनाने की भी प्रक्रिया इलीगल कहलाएगी कि लीगल कहलाएगी? इलीगल कहलाएगी, राइट। यही लॉ भी कह रहा है कि बॉस, व्हेन यू आर ऑलरेडी being held liable to do something illegally, then why subsequently should we prove that you had done this act or you have not done this act? Why can't you, being an accused already undergoing trial of a scheduled offense, prove it in your own way or in your own manner as to why you are not an accused of a case of money laundering thereafter commission of a scheduled offense? Right. We can move on now. Kostav has asked Mr. Will someone himself or herself provide information which could be used against him or her? Why would anyone do that? The PMLA never says that the statement under Section 50 is the ultimate source of libel. Obviously, the statement that is being given under Section 50 has to be corroborated by other sets of relevant evidences. It is not only basis the statement under Section 50 that you are being held to be guilty. The Supreme Court also says on a couple of occasions that why under Section 50, if you have obtained a statement, would that suffice for a reason of a conviction? It needs to be mandatorily, that statement under 50 either needs to be mandatorily accompanied or supplemented by necessary evidences on record or contradicted by those necessary evidences on record. अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है तो अक्यूज बाइज्जत बरी हो जाएगा। सपोर्ट कर रहा है सेक्शन 50 का स्टेटमेंट से एविडेंस, तो वो फिर कन्विक्ट हो जाएगा। ऋषि, sir, even the accused is alleged to have committed an offense under PMLA, but that does not mean that the state can curb in personal liberty and cast the obligation of the accused. Obviously, when is the state doing that? State has simply conducted an arrest to ensure your presence before a court of a judicial magistrate, which happens to be otherwise a court of a special nature under a special statute. Imagine if the court would, if the ED would have not arrested you, and you under a state of influence or coercion or any kind of pressure would have left the country, then what would have happened to the provisions of erstwhile Section 88 and 89 of CRPC? Procedural laws cannot be implemented or interpreted in the light of a single special statute, right? The ordinary CRPC bhi to lag raha hai. It is obvious, it is always the PMLA read with the CRPC. Henceforth, PMLA read with the BNSS, right? To prove innocent until proven guilty, no. Read section 27. It is not the case of innocent until proven guilty. This is a reverse psychology statute. The burden, the court ought to presume that you have done a crime. 24 का आप जो है ए पढ़िएगा, ऋषि, आपको समझ आएगा कि क्यों इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का केस नहीं है ये। फेयर इनफ। अब आ जाइए रूट ऑफ बेल, मैग्ना कार्टा, ये सब बेल कहां से आया ये सब आपको पता है ना डियर लर्नर्स? कैन आई गेट सम रिस्पॉन्स प्लीज अगेन?
मैग्ना कार्टा से आया। क्लॉज 39 कहता है अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट से राइट ऑफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, राइट। जानवी उनको मार रही है क्या? ताली बज रही है। अच्छा अच्छा, इसलिए हाथ दिखा रही है। सॉरी, राइट। क्लॉज 39 मैग्ना कार्टा क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स में था कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन था उनका शायद, पता नहीं क्या था मैग्ना कार्टा। एनीबडी? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? Guys, can I make a humble request from everyone? Can you please discuss the feedback form update once I'm done with the lecture? Because I have to answer questions. So every time reading feedback form questions and opinions is genuinely not helping me here. Yeah. 13th century US Constitution. Yes, समझ में आ गया है सबको. Bill of Rights. Okay. Fair enough. Base of American Constitution. Okay. ठीक है. Magna Carta. Clause 39 कहता था कि there ought to be a protection against an illegal imprisonment. बेल शब्द एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, बैलियर, उससे आया है, जिसका मतलब था व्हाट आर दोस कंडीशंस व्हिच शैल एंटाइटल मी अ रिलीज, इज बैलियर, फ्रेंच टर्म। उसी से इंडिया में आ गया बेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ बेल क्या क्या है? वी ऑल नो, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी एंड स्टैट्यूटरी। ठीक है। रेगुलर बेल जो है आप रेगुलर केसेस में अप्लाई कर सकते हैं, 480 एंड 483 ऑफ बीएनएसएस। पहले था 437, 439 सीआरपीसी। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दी स्लाइड्स इन डिटेल बिकॉज ये हम लोगों ने बनाया किसी और के लिए था, शेयर आपके साथ हो गया बिकॉज दोज वर नॉन लॉ स्टूडेंट्स जिनके लिए हमने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किया था, ऑफिसर्स थे वो लोग, तो उनको ये डिटेल में समझाना जरूरी था। यू पीपल कैन डेफिनेटली गो बैक एंड रीड द प्रोविजंस है। इंटरिम बेल इज फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. Anticipation is under a state of anticipation that you may be arrested. 438 था पुरानी सीआरपीसी में, अब 482 है अपने बीएनएसएस में। और स्टैट्यूटरी बेल जो है वो 167 सीआरपीसी में था और अब 187 में है। ठीक है। सो यू मे genuinely go and read this. I am not emphasizing much upon what are the different types of bail. लीगल फ्रेमवर्क है हमारे देश में, बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, एंटिसिपेटरी बेल है, डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट का बेल देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। मेनी क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल 21 हैव ऑलरेडी बीन शॉट एट मी, and the judicial precedents obviously beyond all of this is the judicial precedent which recognizes that no provision, no law, no nothing, if the honorable court deems it fit in the interest of justice considering the facts and circumstances of the individual matter at hand, it may anyway accord for a bail to an accused person who has the right to be enlarged upon such a judgment being pronounced by the honorable court. The next slide please. यस, अब आ जाइए बर्डन ऑफ प्रूफ। आप लोगों के सवालात काफी थे इस पे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक लेट मी आंसर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। अच्छा, पीपल हैव आंसर्ड मी, क्या बात है। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट कॉर्पस। आपका क्राउड बड़ा एजुकेटेड है आयुष, और मतलब मेहनती क्राउड है ये, जो genuine learners are joining this lecture. So this is one thing as a speaker also, it gives a sense of motivation that they are willing to cut down even me. So I genuinely like this thing. So keep on, keep going on. I आप लोग जो भी audience बैठे हैं हमारे साथ, I like the spirit of yours. You are spending a Sunday evening in the most beneficial manner that would have ever been made possible. Right. So I'll now come to who bears the burden of proof.
अक्सर अक्सर रेगुलर केसेस में देखा जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि जिम्मेदारी किसकी है सच बताने की, जिम्मेदारी किस पे है प्रूफ करने की, जिम्मेदारी किस पे है अपने आप को बचाने की या किसी को फंसाने की। तो सिविल मैटर में दोनों में है। प्लेंटिफ कहेगा कि मेरा ये नहीं हुआ, डिफेंडेंट कहेगा इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है। क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूशन के ऊपर था। हाँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया है पोस्ट द निर्भया अमेंडमेंट। राइट। हाँ। नेक्स्ट ने पीएमएलए ऑफेंसेस में I have told you 10 times until now, there is a reverse burden of proof considering there is an already a predicate offense on record. Right? Components क्या है burden of proof के? सेकेंड पॉइंटर देख लें आप लोग अपनी स्लाइड का। पहला है burden of production. Requires the party to present enough evidence to bring an issue before a court of law. Right? And burden of persuasion. That is the obligation to meet the standard of proof. Or standard of proof is obviously dependent upon the preponderance of evidence and establishment of a case beyond a reasonable doubt. तो burden of proof का concept समझ लीजिए, it is the plaintiff or the prosecution ideally, जहां पे लॉ का स्पेशल नेचर है वहां पे ये रिवर्स भी होता है. PMLA is one such example. Even in your regular penal offenses, crime against women post the Nirbhaya amendment, there is a reverse burden of proof on the accused to prove his innocence and not on the prosecution to prove the case. For other offenses under the IPC, the case is separate. Right? Anybody has asked me, sir, I had a question in my Google form when I registered. When will those questions be answered? I think after completion of my presentation, I'll answer all those questions which have been posed to me. Okay, next slide, please. ये हम क्या कर रहे हैं? How does it know? How is this slide relevant? Next slide, please. Yes, now there are certain examples that I would want to quote. Anmol, sir, it is a humble request. Please give your interpretation why there is a reverse burden of proof. Anmol, please revisit this lecture. I have already told it to the audience 7, 8 times as to why there is a reverse burden of proof. You may review the lecture and then you may get to understand it. Right? Presumption of innocence. Presumed innocent until proven guilty. विलियम गैरो साहब का एक कॉन्सेप्ट है. एक बैरिस्टर थे ब्रिटेन में. ठीक है. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. वो उनके हिसाब से कि अगर आप किसी को ब्लेम करते हैं किसी चीज के लिए, तो यू हैव टू हैव ऑल द नेसेसरी प्रूफ्स एंड एविडेंसेस इन योर रिकॉर्ड टू शोकेस द गिल्ट ऑफ द अदर पर्सन. लेटर दिस बिकेम एज द गोल्डन थ्रेड ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस. लिखा भी हमने लास्ट लाइन में पढ़ी है. मेनी इंग्लिश कोर्ट्स हैव प्रोनाउंस्ड several dictums on this. Right? Recent one is a case of Kerala High Court 2024 जो कहता है presumption until proven guilty is merely a legal right, is not merely a legal right, but it is a case of fundamental right as well. So presumed innocent until proven guilty holds a very important concept in our constitution. If I have to see the judicial interpretations of Article 19, 20, and 21, then presumed. Shadab, this session will last for a while. So if you are not interested, you may log out. Right? So presumed innocent until proven guilty, ED में
उल्टा चलता है। The next slide, please. इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में अगर मैं देखूं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहां पर डिफाइंड है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसको सपोर्ट करता है, कहीं डिफाइंड तो नहीं है। ये एक एसेंस निकल के आता है संविधान के अनुच्छेद 20(3) से, जो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल shall have a right against self-incrimination, which shall place the burden upon the prosecution to prove the case of the so-called complainant beyond a reasonable doubt. 2024 है citation. What is the case name of Kerala case 2024? Case name of Kerala case बता देना यार इसको. My office will comment that in the chat box, Vishwajit. Right? Okay. बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर मैं बात करूं, जो पहले अपना 1872 का एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है 2023 का। सेक्शन 104 पढ़े, जो पहले 101 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कहता था एनीवन सीकिंग अ कोर्ट्स जजमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स मस्ट प्रूव दोस फैक्ट्स। So in a criminal jurisprudence, it is all the more relevant that if you want a court's judgment upon the basis of asserting certain factual matrices, obviously you need to prove those factual matrices. You simply cannot come to a court of law, make an irrelevant submission in the name of fighting a case, and eventually just procure a judgment on the basis of an unproven case, not substantiated by ably derived and concluded facts and circumstances. Right? अर्पित तोमर का एक सवाल आता है इसी बात पर, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी is also against principle of natural justice. Is it right? No. Principle of natural justice has given no right to you, which says that you cannot make a statement against yourself. It simply says that no person shall be a judge in his own cause, and before convicting anybody, you will give him the right of being heard. तो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी की जो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट आई है, वो आपके संविधान के अनुच्छेद 20 को आप पढ़ेंगे तो आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन समझ में आएगा क्या होता है, जो कहता है कि आप अपने खिलाफ कुछ बोल भी देते हैं तो कानून उसको आपके विरुद्ध तब तक कॉन्स्ट्रू नहीं करेगा जब तक उसको इंडिपेंडेंट विटनेसेस या अदर एविडेंसेस से वो खुद प्रूव नहीं कर लेता। Study with Megha, thank you so much. But you can study with Abhinav henceforth. Right? Okay. The next slide, please. 102 and 105. Again, you may read it. I don't think it is to be explained. These are statutory provisions. We all are lawyers, law students. We can do the Perak reading ourselves. The next slide, please. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल लिख लीजिए, बहुत जरूरी जजमेंट है ये। ठीक है, इसी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो पर्सन कैन बी हेल्ड टू बी कैन बी कन्विक्टेड अंटिल प्रूवन गिल्टी। इंडियन कॉन्सेप्ट में पहली बार ये जजमेंट हिमाचल प्रदेश के मैटर में आया था 1973 में। आया इससे पहले भी था गाइस, ठीक है, अंग्रेजों के दौरान बहुत बार आया था ये कॉन्सेप्ट तब, लेकिन हमारे चांसरी कोर्ट वोट देना तो थोड़ा हम लोग वो जूरिस्प्रूडेंस उधर का थोड़ा ध्यान नहीं देते। हम लोग जो ध्यान देते हैं वो पोस्ट 1951 को ध्यान देते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन आवर सुप्रीम कोर्ट रियली टुक ऑन द लीड। राइट? अब केएम नानावटी इज अनदर मैटर। केएम नानावटी रुस्तम, अक्षय कुमार वाली याद है, मार दिया था गोली ठाए ठाए 3 बार। एनीबडी रिमेंबर्स रुस्तम? अक्षय कुमार रुस्तम? एनीबडी डज रिमेंबर रुस्तम? Yes, sir.
So people, yes, sir, CoAM Nanavati. Okay. Somebody had asked for the Kerala High Court citation. My office has responded. You may refer the chat of Sri Priyanshu Singh ji. He's a very learned counsel with us and has been very enthusiastic about criminal law practice also. ओके सो रुस्तम की कहानी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरल प्रिंसिपल क्या है क्रिमिनल लॉ का कि जिसको आप अक्यूज साबित करना चाह रहे हो उसको हम इनोसेंट मानेंगे द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन सब लोग बताने की जरूरत नहीं है अब समझ में आ गया हमने सबने बॉलीवुड के काफी अच्छे फैंस सबने मूवी देखी है वेरी नाइस आप लोग ये बात समझिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है और आइडियल प्रिंसिपल था कि हम नानावटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आइडियल प्रिंसिपल इज दैट व्हेन you try to bring a person in a court of law calling him a culprit, the court shall only presume him innocent until proven so. Next slide, please. I think I have explained this slide already. Section 24 की बात मैंने already आपको बता दी है कि proceeds of crime कैसे 2(1)(u) की बात कर रहे थे हम कैसे predicate offense या scheduled offense होने की वजह से वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया है वो पहले नहीं होता अगर ये ओरिजिनल इंस्टेंस का ऑफेंस होता बट दिस इज अ कंटिन्यूड ऑफेंस देयरफॉर द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हियर एंड द सेक्शन 24A जो मैंने कहा भी था आई हैड रिक्वेस्टेड समबडी टू रीड द प्रोविजंस ऑफ 24A so मतलब I'll leave this slide open for a moment you people may have a glimpse of this slide if there is an aspect that you are unable to understand here I can explain that otherwise I have explained these things in detail 30 seconds say let them have a read if somebody is interested in reading if nobody is interested in reading we can move on कौस्तभ तुम हैबिचुअल ऑफेंडर मुझे कह रहे हो you have called somebody a habitual offender I believe it's not me right okay we can move on now अब थोड़ा सा आप लोग समझिए ये थोड़ा पार्लियामेंट्री डिबेट्स विबेट्स हम लोग ने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया है खोज खाज के हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं इस स्लाइड से आपको ये दिखाना चाहते हैं हम जॉर्ज मिल जाएगा फीडबैक फॉर्म रुक जाओ अभी सेशन हो जाने दो प्लीज ओनली लॉ रिलेटेड क्वेरीज टू बी आस्क्ड and your organizer has requested you this 10 times now I can read his messages also please let us have some sense of respect for each other na right फली नरीमन जेठमलानी साहब ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए इन लोगों ने काफी आपत्तियां जताई थी जब बिल पास हो रहा था जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल was pending its passage in the Lok Sabha and eminent jurists and the then parliamentarians had raised serious objections and had raised serious doubts that this law will become draconian eventually ऐसा हुआ नहीं ठीक है some were apprehensions some were really going off board but trust me the law has been able to stick to its very genesis and very core till now you ask me because I have a very simple opinion to share that ideally 10 में 8 केस जो ईडी पकड़ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है it is not a case where innocents are being held liable see मतलब I'll give you a simple example आप भी अपने घर में आराम से बैठे हो ना मैं भी अपने घर में आराम से बैठा हूँ आपके भी मम्मी पापा आराम से अपने घर में है मेरे मम्मी पापा भी अपने घर में आराम से है तो ईडी इज नॉट ट्रबलिंग अस और आवर पेरेंट्स because our parents and neither us have laundered money this ideology that ईडी तो पीछे पड़ जाता है is not correct ईडी किसके पीछे पड़ता है उसके पीछे बहुत सारा एविडेंस होता है fair enough right next slide we can move on
guys, burden of proof, Kavita G Pillai and all, you can refer to this. ये सेक्शन 24 हमने ट्रेस कर लिया है कि 2012 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन में क्या चेंज हुआ, ठीक है। यही सेक्शन 24 में कोर्ट के ऊपर प्रिजम्पशन लगाया गया है कि ईडी के केसेस में कोर्ट विल प्रिज्यूम कि पैसा लॉन्डर हुआ है एंड द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन द डिफेंस टू शोकेस कि उसने पैसा लॉन्डर नहीं किया। यही मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 24 एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल। ये पहले था कि 45 और 24 के जो प्रोविजंस हैं उनको काफी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बेल एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इवेंचुअली many matters in the last 1 year I've seen Supreme Court has simply granted bail because a long period of incarceration has been served by the accused. So, trust me, the so-called twin conditions under 45 and the reverse burden of proof under 24 has genuinely not helped the ED or the prosecution here. Rather, it has helped the accused persons because ये सारे प्रावधान होने के बावजूद भी the jurisprudence has merely been restricted to a simple case of the period of incarceration having been undergone by the accused persons, right? So किसी ने 18 महीने जेल कर लिए, बेल दे दिया उसको, किसी ने 12 महीने जेल कर लिया, उसको बेल दे दिया, अदरवाइज 7 साल की सजा है। Beta, what conditions the court granted bail in PMLA cases? No conditions. I have drafted counter affidavits. Let me tell you, ये हैं चोर। इन्होंने जो लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट बैठाया हुआ है, राइट? It is very, and you forget law for a moment, guys. Forget law for a moment. हम वकील हैं, आप वकील होने वाले हैं, होंगे, आप हमसे सीनियर भी हो सकते हैं। सच सच प्रणाम आप सबको। आप लोग एक सिंपल सी बात समझिएगा, 2 घंटा सुन के आप और मैं बोर हो गए, राइट? मैं बोलते बोलते आप सुनते सुनते। इमेजिन द प्लाइट ऑफ अ ED ऑफिसर हु हैज स्पेंट 10 years टू क्रैक दिस। 2 घंटे का ज्ञान आप और मैं नहीं ले पा रहे हैं इस टॉपिक पे, जनरलिटी पे। इमेजिन एक ट्रांजैक्शन कोई पुलिस ऑफिसर 10 साल बैठ के तोड़ रहा है। Imagine his plight when the transaction when broken, when he has cracked the case, he has caught hold of the accused gets enlarged on bail. वहां वकालत आप लोग अच्छी कर रहे हैं मुझसे, ये संवैधानिक राइट है। अरे है संवैधानिक राइट तो ये भी है ना कि मैं आई विल अपहोल्ड द स्टेटस ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन एंड माय ट्राई कलर एंड माय नेशनल फ्लैग। तो वो तो नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन बेल लेने के लिए सबसे आगे हैं। तो why is there a constitutional right to protect wrong, but there is no constitutional right to protect right? So yes, a devil's advocate may have a separate set of argument, but as a counsel for the state, I have a separate set of not only just arguments, but a separate set of thought process in this game. Somebody has laundered crores, yeah. Somebody has genuinely funded terrorist organizations. Somebody has brought bombs and landmines. Just because that person has undergone an imprisonment of 18 months, 24 months, 16 months, he becomes entitled to be released on a bail. कोई 200 करोड़ रुपए लॉन्डर करके गांजे की खेती कर रहा है हिमाचल में, उससे गांजा बेच रहा है आगे, आपने उसको इसलिए बेल पे छोड़ दिया कि वो 3 साल जेल बैठ चुका था, तो फिर आप पकड़ क्यों रहे हो? छोड़ दो। You go serve them a notice saying that you are an accused, we will not arrest you, because either which way you will be released later. And I can understand many people are involved in the offense of money laundering. You are genuinely leaving the smaller offenders
You are enlarging them on bails. Unka role is not greater. I can understand. Why are you releasing the kingpins? Why are you releasing the masterminds of these transactions? 8 accused हैं, आठों ने मिलके पैसा लॉन्डर किया, किसी ने अकाउंट खोला, किसी ने पैसा जमा किया, किसी ने पैसा निकाला, किसी ने उस पैसे का खाया। 8 के 8 छोड़ दिया आपने, क्योंकि सबके 12 महीने 16 महीने जेल हो गई थी। This is the problem. So you ask me, why is there a reverse burden of proof? There ought to be one. You ask me, why is there a presumption to presume that the person is guilty? Because obviously, yeah, there is another FIR in his name. He's already undergoing a trial. That is why I presume him to be guilty. Okay. I think this is where we have to conclude it. I believe ये सब कुछ रह गया है आयुष भाई, जो रह गया है उतने स्लाइड्स को आई शेयर इट विद द ऑडियंस एट लार्ज, बट इनको मैंने एसेंस दे दिया है, so they can ask me 2-3 questions if they wish to ask on a concluding note. Rest the topic is too much to be covered and which could not have been genuinely covered in a period of 2 hours. So Nikesh Tarachand was one judgment where the ED was not giving any reasons of arrest in writing. So certain amendment happened even after that. The Delhi High Court recently passed a judgment on this. 45 को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बुलाया गया, निकेश ताराचंद ने बताया था ना, but then again Vijay Madan Lal Chaudhary made it constitutional. So many things we have to delve upon here. I can share the PPT for the remaining slides that I was to cover. The slides which I have covered, uska nahi dunga. I believe this session was okay enough for you people to at least understand the basics of how the money laundering law functions in the country. And the Enforcement Directorate, being the premier investigating agency of money laundering matters, how nicely it has done its job. And trust me, ED records, ईडी को आप लोग पता नहीं मीडिया में देख के क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आई डोंट नो, क्या कौन सा लेफ्टिस्ट मीडिया पढ़ते हैं आप राइटिस्ट मीडिया पढ़ते हैं, आई डोंट नो, बट गिविंग यू अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, a lot of illegal terrorist fundings have been brought down by the subsequent actions of the ED. चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ईडी आपके और मुझे परेशान नहीं करेगा, आप लीगली चलो, नो लॉ इज गोइंग टू ट्रबल यू। व्हेन यू गो इलीगल, and that too illegal at a scale where it is visible, there have to be agencies to prosecute. Sir, can we have your LinkedIn profile? Obviously यार, तुम अभिनव मिश्रा LinkedIn पे लिखो तो तुमको मिल जाऊंगा मैं। हाँ, ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी वो मेरा एक और थोड़ा यंगर वर्जन की होगी, so that will be the difference that you will be able to. You can follow my page also, चेंबर्स ऑफ अभिनव मिश्रा लिखिएगा आप लिंक्डइन पे, मेरा पेज दिख जाएगा। ईशानी का एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आयुष भाई एक सवाल आखिरी ले रहा हूँ, ले सकता हूँ? ईशानी asks me how to retain the kingpins efficiently, like what evidences play a crucial. You cannot. ये मसीहा बन लेंगे ना सारे सुप्रीम कोर्ट वाले, तब तक you cannot. And I have a great amount of respect for my court. I practice there. I see how the jurisprudence evolves every day there. The courts may be thinking something at the time of giving a judgment. Obviously, I may be a biased person here. Okay, you need not vote by my opinion entirely. I am a ED man. I'll always support the state. But
the courts obviously they have to create a balance. हो सकता है 7 साल की सजा में कोर्ट देख रही हो कि 3 साल तो रह लिया अंदर, छोड़ दो, कुछ कन्विक्शन के बाद भी तो सेंटेंस सर्व करेगा ना, कि सारा सेंटेंस अंडर ट्रायल ही सर्व कर लेगा. So you genuinely cannot do anything to curb it. Obviously, present your best case before the court. That is the best thing you can do. You tell the court why is the release of this person not in the interest of justice. Then the court will understand. And probably the judge of the day may sympathize with your case. Until then, keep doing your job on a decent scale every day. And on this note, I would like to conclude. Thank you, Just Corpus. Thank you, Ayush. Thank you for giving me this opportunity. हिमांशु नहीं मिल रही, अभिनव मिश्रा लिखिए आप. मिल जाऊंगा यार मैं, ऐसा तो. No, Just Corpus has told me not to take any more questions. Right, so I conclude. सक्षम आप जस्ट कॉर्पस की तरफ से हैं? Yes, sir. Should I conclude? So I can give the Okay, concluding remarks. fair enough. Please. Yes, sir. So thank you so much, sir, for that enlightening presentation. Your insights into nuances of the PMLA from a holistic perspective have given us much to ponder. And with that, we conclude yet another illuminating session brought to you by Just Corpus. A big thank you to our guest speaker, Mr. Abhinav Mishra, sir, for sharing his expertise with us tonight. And of course, a heartfelt thank you to our viewers for tuning in. I, Saksham Singh Parmar, signing off for tonight. Thank you so much, everyone.